Hey guys, so in the previous session हम लोग ने देखा कि टेस्ट एनजी के ग्रुप को कैसे हैंडल करता है। सो अगर आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस है, मल्टीपल टेस्ट मेथड्स है और उसमें आपको कोई ग्रुप अप्लाई करना है तो कैसे करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। टुडे विल टॉक अबाउट डिपेंडेंसी फीचर ऑफ टेस्ट एनजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मेथड्स एंड ग्रुप्स का अगर आपको कोई डिपेंडेंट कोड अप्लाई करना हो, लॉजिक अप्लाई करना हो, तो हम टेस्ट एनजी का डिपेंडेंसी फीचर यूज करते हैं। सो जैसे हमने ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किया था, ग्रुप्स हमने मेंशन किया था मेथड के साथ, द सेम थिंग वी नीड टू डू विथ डिपेंडेंसी, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास. Okay, so I'm creating a new class in module 1. Dependency test. All right. Okay, so we got a message yesterday after watching the video. इसमें आप main method use नहीं कर सकते guys जावा की, right? Because you cannot use a main method. The reason is that ये test ng के features है, तो वो @test annotation के साथ ही आप उसको use कर पाओगे. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो जावा एप्लीकेशन, मतलब कोई भी कोड को अगर आपको जावा एप्लीकेशन के थ्रू रन करना है तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करते हैं, बट अगर आपको टेस्ट एनजी यूज करना है, टेस्ट एनजी इंप्लीमेंट करना है तो @test इज मैंडेटरी. Okay, so here I'm creating three methods. Let's say public void login. Okay, after login I want to add to cart. I want to add product into the cart. Then payment. Okay, and the one more, that is logout. That is logout. All right. This is login functionality. This is login functionality. Add to cart, payment, and logout. Perfect. So now, according to this method, like आप जब कोड लिखोगे, so it might be possible कि sometimes login fail हो गया. तो अगर login fail हो गया, so in ideal case, add to cart and payment method and logout. These three methods should not get executed. राइट, बिकॉज अगर लॉग इन ही नहीं हुआ है तो आप प्रोडक्ट को कार्ट में कैसे ऐड, आई मीन प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड ही नहीं कर पाओगे ना. एंड इफ प्रोडक्ट इज नॉट एडेड इनटू द कार्ट, यू कैन नॉट सिंपली यूज पेमेंट मेथड. पेमेंट होगा नहीं, पेमेंट नहीं होगा, राइट? सो पेमेंट जो है वो डिपेंडेंट है लॉग इन एंड एड टू कार्ट पे, या फिर हम लोग ऐसा कुछ इक्वेशन सेट कर सकते हैं कि पेमेंट है, पेमेंट मेथड एड टू कार्ट पे डिपेंडेंट है, एड टू कार्ट जो है वो लॉग इन पे डिपेंडेंट है. ऑलराइट, और ये जो लॉग आउट है, तो जरूरी नहीं है लॉग आउट पेमेंट पे या एड टू कार्ट पे डिपेंडेंट हो, लॉग आउट भी लॉग इन पे डिपेंडेंट है. सो हाउ डू यू सेट द रिलेशंस बिटवीन दिस मेथड्स, कि अगर एक टेस्ट मेथड फेल होती है, सो अकॉर्डिंगली, आई मीन फेल होती है मतलब अगर वो पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल हो गया तो रिमेनिंग मेथड्स विच आर डिपेंडेंट, ओके, वो स्किप हो जानी चाहिए, राइट? अगर लॉगिन फेल हो गया तो इन अवर केस एड टू कार्ट स्किप होना चाहिए एंड लॉग आउट स्किप होना चाहिए. तो ये कंडीशंस आप कैसे मेंशन करोगे, राइट? सो चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. @test @test
@test, and we will also mention @test. All right. So login जो मेथड है, एड टू कार्ट लॉगिन पे डिपेंडेंट है, लॉग आउट भी लॉगिन पे डिपेंडेंट है, राइट? सो हाउ डू यू सेट द रिलेशन? तो आपको @test जो लिखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रुप्स देखा था। जिन्होंने ग्रुप्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे ग्रुप मेंशन किया था वैसे ही आपको डिपेंडेंसी मेंशन करनी है। सो वी कैन राइट राउंड ब्रैकेट कंट्रोल स्पेस करना, और आपको यहां पे एक ऑप्शन आएगा डिपेंड्स ऑन मेथड्स, एंड आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मेथड का नेम लिखना है, विच इज लॉगिन। दैट्स इट गाइस। डिपेंड्स ऑन मेथड्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डबल कोट में वो मेथड का नेम लिखना है। सेम स्टेप I need to do for logout @test. So depends on methods. See, there are two options guys. एक है depends on group and depends on methods. तो आप मेथड को भी यूज कर सकते हो जो अभी कर रहे हैं, आप ग्रुप को भी डिपेंड कर सकते हो। मतलब आपने कोई ग्रुप बनाया तो ग्रुप के मल्टीपल टेस्ट केसेस जब तक रन नहीं होंगे, लेट्स से ऐसा सिनेरियो कब आएगा ग्रुप का, वी विल डिस्कस इट सम टाइम। पहले मेथड देख लेते हैं। एंड लॉगिन, ओके। सेम वे पेमेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एड टू कार्ट। एड टू कार्ट, ओके। चलो अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो उसने प्रिंट किया लॉगिन, एड टू कार्ट, लॉगआउट। ओके गाइस, यहाँ पे टेस्ट एनजी में हमको प्रायोरिटी मेंशन करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज प्रायोरिटी अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो अपर केस अल्फा फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट मी डिफाइन प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, priority is equal to 2, three, and 4. All right, now let's run them again. Let's run the test case again. Now see, it has printed properly login, add to cart, payment, and logout. Now what I'm doing is add to cart में let's say there is a bug. Perfect. add to cart में कोई प्रॉब्लम आया, add to cart में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? सो इन दैट केस अगर डेलिबरेटली अगर मैं यहां पे एड टू कार्ट में ऐसा मेंशन कर दूं assert dot fail, right? assert dot fail, and we can simply print a message products not added. Perfect. Products not added. So assert dot fail, हम deliberately, we are guys just deliberately failing the particular test method. Okay, so now if I run this test case, you can see the behavior of it. So you can see that it has executed 4 test case. Okay, 4 test case मतलब 4 methods. Test case मतलब methods. 4 test methods में से 2 test cases got passed. 1 fail, add to cart है जो fail है, और because of add to cart, payment is failed. See that? So payment is failed. So basically इट्स ऑल अबाउट डिपेंडेंसी। आप जैसे उसको डिपेंडेंसी सेट करोगे वो अकॉर्डिंगली कोड को रन करेगा। चलो एनीवेज वी आर सिंपली
write the dependency here and let's assume this is absolutely okay, कोई problem नहीं है यहाँ पे, but user is not able to log in. User is not able to log in. Okay, sorry. Invalid credentials. Okay, so now what will happen, because this add to cart is totally dependent on this and logout functionality is also dependent on this. And one more thing guys, so we can say that this add to cart method will be skipped. Okay, but payment will also get skipped because payment is dependent on add to cart. So add to cart अगर आप रन करोगे, मतलब ये क्लास रन होगा तो login is failed and because of that add to cart and logout will not be executed. They both will be skipped. Perfect. And payment is dependent on this method add to cart, तो वो भी skip हो जाएगा. चलो रन करके देखते हैं. Right click, run as test test. So now you can see the output. So one fail, but 3 skips. Guys, there is one failure. Failure एक ही है, right? But 3 skips. 3 मेथड स्किप हो गई. एक फेलियर आया और 3 मेथड स्किप हो गई. So this is a dependency feature. Now what you can do guys, आप इसमें एक्चुअल कोड लिख के एक बार टेस्ट करके देख लो. You can simply write a code. Login का एक कोड लिखो and simply put a validation if else. Okay, or else you can use try catch और अप्लाई करके देखो. एंड सेम वे एड टू कार्ट, सेम वे लॉग आउट, पूरा एक्चुअल कोड रन करके देखो. सो आपको एक आइडिया आएगा. बट इससे आपको एक फीचर का पता चल गया कि कैसे वर्क करता है. ऑलराइट, चलो थैंक यू.